Dear Dad, what if I tell you that 1 year changed everything in my life and the girl who used to once love going to school now barely wants to go? Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. ये है आपकी एडमिन ऐशानी एंड आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है बिकॉज यू हैव ऑलवेज सीन मी पोस्टिंग DIYs और व्लॉग्स बट आज हम स्टोरी टाइम पोस्ट करने वाले हैं. देयर आर टू मेन रीजन्स व्हाई आई एम डूइंग अ स्टोरी टाइम. एक, दैट आई लव टॉकिंग. लाइक तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे पेरेंट्स, तुम मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, तुम मेरे को जो भी जानते हो उनसे पूछ लो. उन्हें लगता है कि मैं भूतों से बात करती हूँ. लाइक ऑब्वियसली इट इज़ मेंट एज अ जोक बिकॉज मुझे मेरी खुद भूतों से फट जाती है. बट आई टॉक टू माई सेल्फ एट अ वेरी अनहेल्दी लेवल. लाइक तुम मुझे बाथरूम में पकड़ोगे खुद के साथ बात करते हुए, तुम मुझे मिरर के सामने पकड़ोगे, देखोगे मैं खुद से बात कर रही होंगी. लाइक इफ़ यू लॉक मी इन अ रूम विथ नथिंग, फ़ोन, TV, लाइट, हवा, पानी, खाना, मैं खुद से बात कर रही होंगी. ठीक है. सो दैट्स द लेवल ऑफ ऑब्सेशन आई हैव विथ टॉकिंग विथ माई सेल्फ. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ दैट मेरी लाइफ में इतने इतने सो मैनी कांड्स एंड कलेश हुए हैं पिछले एक साल में, सिर्फ एक साल में, दैट आई हैव लॉस्ट ट्रैक. आई हैव लॉस्ट ट्रैक एंड every single of these situations and Kand and Kalesh have taught me a lesson which I really want to keep in track because I know the moment I lose track, I'll end up making that same mistake I did, जिसकी वजह से I ended up in that Kand or I ended up in that such a situation that left me emotionally gone. Details में तो जा नहीं पाऊंगी because I still live with the same people in my society and in my school. So if I have to explain you the whole story, the details are very important. Like even the minute details are very important to understand how the whole thing played out. And names are also very important to remember किसने क्या किया था. So I won't be able to give you the names and the details because अगर मैंने बोल दिया तो हंगामा हो जाएगा फिर से एंड मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही होंगी. सो आई जस्ट ट्रीट द स्टोरीज एज 3 स्टोरीज आई एम गोना टेल यू बहुत ऊपर ऊपर से एंड टेल यू द लेसन्स आई लर्न दैट यू गाइज शुड ऑल्सो नो दैट ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हुए हैं एंड ऐसे लोग की ही संख्या ज़्यादा है. ओके, सो माई लाइट गेव अप ऑन मी, सो मुझे पोजिशंस चेंज करने पड़े वीडियो शूट करने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टोरी 1. वेल, स्टोरी 1 इज़ अबाउट अ फ्रेंड ग्रुप whom I thought would exist forever, but it didn't even exist 2 years. So let's get started. I shifted schools in grade 5. हाँ जी, मैं एक नेटिव हिंदी स्पीकर नहीं हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है. If you have any guesses about what my mother tongue is, you can write it in the comments. So I shift schools in grade 5 and मेरी फटरी होती है फर्स्ट डे के लिए because I never had a conversation with a Hindi speaker in my whole life. ठीक है. सो मेरी फटरी होती है फर्स्ट डे स्कूल जाने के लिए. बट आई रियलाइज दैट माई स्कूल पीपल आर वेरी नाइस, दे आर वेरी काइंड एंड दे आर वेरी बेटर दैन माई ओल्ड स्कूल. सो 1 week into the school, I love my new school, I love my section and everything like that. 1 year later, now in 6th, I get shuffled from my section. So I'm begging and crying to my parents कि I want to go back to section B. That's my comfort zone. I know everyone there. टीचर से बात कर लो, मुझे वापस डाल दो. बट माई पेरेंट्स डू नॉट, दे डू नॉट. सैड लाइफ. So I decide to give 6th a shot and turns out that I'm so grateful that my parents did not listen to me because 6th aka मेरी class 6th C turns out to be the love of my life, like the best academic year, the best class I had in my new school. I got a friend group, I got a best friend, I got cool classmates और मुझे क्या ही चाहिए होगा. So obviously when we went into 7th, I was supposed to be happy if I get the same classmates, but I was not because by the end of 6th के end के एक महीने में my friend group started having issues like proper issues. मुझे उससे नफरत है. अगर वो friend group में मुझे नहीं रहना, she's too sensitive, she's annoying and stuff like that. हम जाएंगे उसे नहीं लेंगे and stuff like that. That started happening. So I didn't turn out to be happy when I realized that मेरी section shuffle नहीं हो रही. 7th में the shit started happening. As I said, मेरी class के लोग started fighting, मेरी friend group started fighting. That's the main thing that made into the way into the class. And I soon got to know that by late 2024, that was the ending of 7th,
my friend group is a new policy, add in, kick out. They're going to add new people, they're going to kick out people, and I get to know that the first one they're going to try this so new cool policy on is me. Their actions start showing this. I leave the friend group. I leave that friend group. And now aati hai the starting of story 2, where my best friend plays the ultimate Uno reverse on me. The truth is that the problem that happened in the last month of 6th and that started in October 2024 were all with me. Everyone had problems with me. And here I accepted. मैं दूध से धुली नहीं हूँ. Maybe I had also made mistakes. भाई मैं भी इंसान हूँ. मेरे से भी गलतियाँ होती है. Maybe I did. But the Uno card that my best friend played on me was so crazy. मुझे ग्रुप छोड़ने के बाद I tried to approach her so many times. मैंने बोल दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू उस फ्रेंड ग्रुप के साथ रह रही है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरे साथ रह. I don't care if you talk to them or don't. You have the whole permission to go and talk to them and everything, to be with them and all. But just don't cut me off. And she was okay with that. But धीरे I started to realize that she had cut me off. I tried to approach her like so many times. मेरे calls ignored किए, मेरे messages ignore हुए, and then suddenly one random afternoon, 3 weeks later, she comes at me and वो मुझे सुनाने लगती है that I cut her off. Why are we still here? And when I do not care, she goes to my teachers and the new friends who had taken me in, obviously not out of pity, but because they could see मेरी friend group क्या कर रही थी with others too. They took me in and they took everyone in जो निकल रहे थे friend group से, because they could clearly see what my friend group was doing. My friend group had become a dominating group in the class and they were legit, उनकी जो domination है वो सब पे चला रहे थे. It was not as innocent and naive as we were in 6th. So मुझे क्या पता चलता है after my best friend does this shit that she herself played a huge role in kicking me out of the group. And वो उल्टे मेरे मुंह पे आके झूठ बोले जा रही है, दूसरे को झूठ बोले जा रही है, मैंने तो कुछ किया नहीं, she cut me off. So story 3 brings us back to the dynamics of my friend group. At the starting मेरे friend group में थे 4 लड़के और 3 लड़के. 7th में आते one boy leaves the school, so the friend group becomes from 7 to 6 people. Yes, even number. अब 2 लड़कियों का पेयर, 2 लड़कियों का पेयर, 2 लड़कों का पेयर. It becomes equal. सबके डुओ है, किसी को lonely feel नहीं करना. Everything becomes perfectly fine. अब now these 2 boys were my best friends, okay? Obviously, I had my best friend, my female best friend. She was my everything. But these 2 boys were also my best friends and इन्हें मैं crazy level तक trust करती थी. Like my brothers, मैंने इन्हें राखी बात रखी है, ये मेरे भाई थे, legit. As a brother, they meant a lot to me. But what I get to know that मेरे को ग्रुप से निकालने के लिए मेरे ये प्रिय भाइयों ने ही मेरे पीछे एक WhatsApp ग्रुप बनाया था to plan to kick me out. I still remember मेरे हाथ काँप रहे थे when the person who was telling me this wrote this to me. Every time the person told me ये हुआ on face, I still remember that I just couldn't stop tearing up. Because I never in a million years expected them to do something like this. तुम्हें फनी चीज़ पता है, all this shit are not even 1% of the shit I went in grade 8. Grade 8 की कहानी I may share in the near future, but not now because I'm still in 8th. 3 दिन में मेरे final exams हैं. And the people whom the story is about are near me. Not in the close relationship kind of sense, but they live near me or they go in bus near me or they are in my class, जिसकी वजह से I would not be able to share their story. Because अगर मैंने share कर दिया तो हंगामा हो जाएगा फिर से as usual, and I do not want that to happen because grade 8 में जितना मेरी mental health की ढिशुम किए इन लोगों ने, अभी मैं नहीं चाहती कि वो वापस से ये वीडियो देख के वो कर दे. This story of grade 7 will only have 3 lessons. 1, you should have a sophisticated screening process of friends. जो भी आए, जो तुमसे अच्छे से behave करे, they are not all of your friends. All of them are not your friends. Some are here just for a hidden agenda. दूसरी बात, everyone will not like you.
everyone cannot never like you. तुम्हारे फेवरेट कार्टून्स के भी हेटर्स हैं, तुम्हारे फेवरेट एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, उनके भी हेटर्स हैं भाई, उन्हें भी सब पसंद नहीं करते. Everyone will not like you, and that is the first step of maturity, when you realize that the world will not like everything. And step 3 is that no matter how close a person gets, please do not get emotionally attached until you have at least been with them for 2 to 3 years. ठीक है? The thing is, sometimes people change, and दूसरे situations में it's like that people start showing you their real faces when you start living with them, being with them. So please have a proper screening process, a proper time before you start trusting people. Just do not go and trust anyone who comes into your life. खुद पे ट्रस्ट करो, खुद के गट्स पे ट्रस्ट करो, स्क्रीनिंग प्रोसेस बनाओ एक कि ऐसे ऐसे क्राइटेरियाज, एंड देन लेट पीपल इन. इस वीडियो में आई टॉक्ड अबाउट माई 7th का फेज, एंड आई टोल्ड यू वाई आई कैनॉट शेयर द 8th का फेज नाउ. बट इन द नियर फ्यूचर, इफ यू really want me spilling the tea about my 8th का phase that was 10x more drama, 10x more crazy and 10x more chaos, then you gotta have to hit the target. इस वीडियो को मुझे बनाने लगे हैं 2 घंटे, इस वीडियो के एडिटिंग में मुझे लगेंगे 2 घंटे. सो प्लीज़ मेरी 4 घंटे की मेहनत के लिए 100 व्यूज़, दैट इज़ 100 व्यूज़, तो प्लीज़ लेके आ जाओ ना. मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ 100 व्यूज़ लेके आ जाओ ना, एंड मैं तुम्हें बना दूंगी 8th वाला वर्जन एकदम रेडीली. 100 व्यूज़ लेके आ जाओ ना बस. आज के लिए इतना ही. आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. टिल देन, till next story time, till next crazy story of me ending up into another can't. Till then, bye bye.